Hello everyone, welcome to the M3 Academy. In this session, we are discussing about the cerebral palsies. Yes, and this question previously the scissoring gait and the type of the cerebral palsy is already asked. Yes, so we will see that different type of the cerebral palsy and super easy way to mnemonics. Yes, remember. Yes, so cerebral palsy type causes and the key point. First, there is a two type: spastic cerebral palsy, and another one is डिस्काइनेटिक। यस, सो दो तरह की सेरेब्रल पाल्सी होती है, स्पास्टिक और डिस्काइनेटिक। सो पहले स्पास्टिक में देखते हैं दोनों में कौन ज्यादा कॉमन है। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी ज्यादा कॉमन होती है। सो स्पास्टिक S4 यू कैन से S4 सबसे कॉमन। सो सबसे कॉमन कौन होती है? स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। यस, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी। नाउ टाइप फर्स्ट इज डिप्लेजिया। पहला टाइप क्या है यहाँ पे? डिप्लेजिया। सो इन डिप्लेजिया में क्या याद कर सकते हो आप? यस, now, so diplegia started from the die. Die means you can say two. Die means क्या होता है? Two. So this is second most common in India. This is second most common cerebral palsy in India. Then diplegia में क्या आ रहा है? I और P. I for you can remember ischemia, infection और P for prematurity. Ischemia, infection and prematurity. IP. So इसके नाम से ही पता चल रहा है diplegia. Die means two. So second most common in the India. Now IP, I for ischemia, I for infection and prematurity is a causes. Yes, die को ही क्या बोल सकते हैं? Bi. So this is present with the bilateral spasticity and more on the lower limb than the upper limb. Yes, so diplegia में क्या हो रहा है? D for down. So you can remember down, P for pair. So down pair means lower limb में ज्यादा होगा upper limb से. Yes, इसमें क्या मिलेगा? Scissoring gait, commando crawl. Yes. एंड डिप्लेजिया जब पढ़ते हैं, डिप्लेजिया में क्या आता है? पी एल। सो पी फॉर यू कैन रिमेंबर पेरीवेंट्रिकुलर, एल फॉर ल्यूकोमलेशिया। सो पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया किस में मिलेगा? स्पास्टिक डिप्लेजिया में। नाउ एल फॉर यू कैन रिमेंबर लर्निंग डिसेबिलिटी। सो बाय द नेम डिप्लेजिया इसके सारे फीचर आप बता सकते हो डिप्लेजिया के नाम को पढ़ के ही। डाई मीन्स टू है, सो सेकंड मोस्ट कॉमन इन इंडिया है। देन आईपी से इस्चेमिया, इन्फेक्शन एंड प्रीमेच्योरिटी है। डाई मीन्स बाई मीन्स बायलेटरल स्पास्टिसिटी मिलती है, और स्किजरिंग गेट, कमांडो, क्राउल मिलता है। सो नाउ डिप्लेजिया यू कैन रिमेंबर दिस पिक्टोरियल निमोनिक। दिस इज अ गर्ल नेम दीप्ति। सो दीप्ति मीन्स डिप्लेजिया, दीप्ति मीन्स डिप्लेजिया, एंड यू कैन सी दिस स्कीजरिंग गेट। सीजर यहाँ पे दिख रही है। सो सीजरिंग गेट यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। दिस इज सीजरिंग गेट एंड दिस इज PL। सो पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया। यस, सो डिप्टी स्कीजरिंग गेट एंड डिपिंग। यस, और कमांडो क्राउल भी। आगे देखते हैं नेक्स्ट type is hemiplegia. So hemiplegia, spastic hemiplegia type the cerebral palsy. So hemiplegia H, so H4 you can remember hand. So this is more common in upper limb than the lower limb. इससे पहले जो डिप्लेजिया पढ़ा था वो लोअर लिम्ब में ज्यादा था। यहाँ पे हेमिप्लेजिया H4 hand means upper limb. So upper limb में ये ज्यादा मिलेगा। नाउ एच के बाद क्या था अल्फाबेट में? ई फॉर यू कैन रिमेंबर इक्विनोवोरस। सो विच टाइप ऑफ द डिफॉर्मिटी? इक्विनोवोरस डिफॉर्मिटी। एंड हेमीप्लेजिया यू कैन रिमेंबर हेमी से सेम प्रोनाउंस वर्ड आएगा हिमेट मींस ब्लड मींस वेस्कुलर। सो कोजेज आर वेस्कुलर इन्फेक्शन एंड जेनेटिक। कोजेज आर वेस्कुलर इन्फेक्शन एंड जेनेटिक। यस, सो हाउ यू रिमेंबर दिस हेमीप्लेजिया? बाय द स्टोरी ऑफ द हेमा। In diplegia, we remember by the story of the dipti, and in hemiplegia, we can remember by the story of the hema. Yes, and this hema girl, you can see this picture. One hand is affected by the seizure. So you can say hand means upper limb ज्यादा affected है, lower limb से यहाँ पे seizure इसको आ रहे हैं। यस, सो सीजर 33% में यहाँ पे सीजर मिलते हैं। एंड यू कैन से प्रो एनसेफेलिक सिस्ट। यहाँ पे क्या कंडीशन होती है? एसोसिएटेड प्रो एनसेफेलिक सिस्ट। यस, तो ब्रेन में क्या मिलता है? प्रो एनसेफेलिक सिस्ट। तो हेमा पूरी की पूरी सेफेलिक, इसने हेमा पूरी की पूरी सेफेलिक है, मींस प्रो एनसेफेलिक सिस्ट यहाँ पे मिलती है। यस, so early hand preference is present, walking delayed up to 18 to 24 months. You can see in this picture an equinovarus deformity because H के बाद क्या था? E, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो equinovarus deformity. Now, so next is quadriplasia. So quadriplasia, spastic cerebral palsy is most severe and most common in India. Yes, most severe and most common in India. Quadriplasia. So quadri means four. So four आ रहा है यहाँ पे. So ये most severe होगी and most common in India. Second most common कौन है? Second means bi means die. Die से क्या बनता है? Diplegia. Diplegia is second most common. Yes, so quadriplasia most severe and most common in India. So you can remember by the story mnemonic of the Muni Baba.
यस, मुनि बाबा, सो यू कैन से जो मुनि है वो इंडिया में ज्यादा होते हैं, सो दिस इज मोर कॉमन इन इंडिया। एंड दिस मुनि इज कोटेड बाय दिस, एक रस्सी से इन्होंने खुद को बांध लिया है, यहाँ पे चारों तरफ इनकी बॉडी यहाँ पे कोट हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वाड्रीप्लेजिया, यस क्वाड्रीप्लेजिया, यहाँ पे फूड भी नहीं ले पा रहे, मतलब यहाँ पे इनको स्वेलिंग में डिफिकल्टी हो रही है, मोटर वर्क नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से मोटर इम्पायरमेंट यहाँ पे है, और उनको सीजर भी आने लग गए हैं। तो सीजर स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, यस, और इस पोस्टर में मेंटेन रहने के कारण इनको काफी हेडेक होने लग गया, और इनका जो मेंटल रिटार्डेशन भी यहाँ पे हो गया, और इनके पास कोई सुपर पावर है ये क्लेम कर रहे हैं, तो सुप्रा न्यूक्लियर पालसी यहाँ पे होती है। तो कैसे इसको समझ सकते हैं, तो क्वाड्रिप्लेजिया यू कैन से मुनि बाबा टाइड अप द ट्रबल, यस। So you can read this story mnemonic. Once upon a time, there was a kind old man named Muni Baba. He lived helping people and always trying new things himself. Too healthy and strong. One day, Muni Baba uh, thought they would try to new pose, but he tried the stretch. Something strange happened. His arm and the leg got all tangled up. उन्होंने न्यू पोज को ट्राई किया, उसमें इनके दोनों आर्म, हाथ और पैर उसमें टेंगल्ड हो गए, यस। तो मुनि बाबा laughed and say, "Oh dear, my body feels it tied for knot." So he tried to move, but the arm and leg were too stiff, yes, to untangle. So he thought it's like my body has lost all the strength. Yes, so you can relate with the cerebral palsy clinical feature. So lost strength means marked motor impairment, and four limb means quadriplasia. Yes, now so tangled and stiff body represent a motor problem in the quadriplasia. Four limb are affected, and Muni Baba then realized that his head felt heavy and slow. So you can say head felt heavy and slow means intellectual problem and developmental delays. Yes. And Muni Baba struggled. He suddenly felt the sharp jolt in his body means lightning and struck him. So lightning jolt उनको मिला means उनको क्या आया, सीजर. Yes. तो यहाँ पे आप सीजर को भी याद रख सकते हो। नाउ फूड स्टक, सो दिस रिप्रेजेंट द डिफिकल्टी इन द swallowing एंड कैन अकर इन द क्वाड्रिप्लेजिया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दी मुनि बाबा। यहाँ पे क्या देखा, मुनि बाबा मतलब कुछ इंडियन टर्म है, सो इंडिया में मोस्ट कॉमन है, मोस्ट सीवियर है, यस, इनके पास काफी सारा सुपर पावर होती है, तो सुप्रा न्यूक्लियर पालसी यहाँ पे मिलेगी। और इन्होंने एक डिफरेंट पोस्टर को यहाँ पे ट्राई किया है, चारों लिम्ब इनके इसमें फंस गए, मीन्स यहाँ पे क्वाड्रिप्लेजिया यहाँ पे हुआ है, कोई मोटर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, इनका हेड स्लो हो गया है, मोटर डिफिकल्टी यहाँ पे हो रही है, डेवलपमेंटल डिले हो रहा है, और मल्टीसिस्टिक एन्सेफेलोमलेशिया भी यहाँ पे हो सकता है, सीवियर पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया भी यहाँ पे मिल सकता है। यस, सो दिस इज द स्टोरी निमोनिक अबाउट दिस। नाउ so next type is the dyskinetic cerebral palsy. Dyskinetic cerebral palsy in 15 to 20% cases, and dyskinetic you can remember D for dopamine. So dopamine responsible for the extrapyramidal symptom. Extrapyramidal symptom derived from the basal ganglia, and basal ganglia disease is the connectedus. Yes, so all the things is correlated. Basal ganglia, connectedus, yes, extrapyramidal symptom, and dyskinetic cerebral palsy an extrapyramidal symptom. But you can remember this dyskinetic cerebral palsy by Disco King. Yes, disco dance. Disco dance से याद कर सकते हैं। Obviously, dyskinetic cerebral palsy means the disco dance. Disco dance. Dance means athetosis and choreoathetosis. Athetosis and choreoathetosis means extrapyramidal movement. Yes, and this movement affect the basal ganglia. Basal ganglia also affected in connectedus. Yes, and this is a common causes is asphyxia, mitochondrial, genetic, connectedus. Yes, and there is a rigidity, hypotonia, dystonia, athetosis. As the name suggests, dyskinetic. So something movement problem. मूवमेंट प्रॉब्लम मीन्स एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। यस, सो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी मिल सकती है, हिप डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है, ये सब यहाँ पे मिलेगा। बेसल गैंग्लिया स्कारिंग मिलेगी, थैलेमस स्कारिंग मिलेगी। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर डिस्को किंग एंड वोबली डांस। यस, so wobbly dance means chorea and athetosis. Yes, you can appreciate their hip dislocation also, and you can appreciate their hypotonia, dystonia, and athetosis. Yes, so this comprises 15 to 20%. Dyskinesia 10% मान सकते हो, इतना ही इसमें ये वाली cerebral palsy होती है। Yes, so now time for the solving the MCQs. Yes, so if you know the answer, you can comment in the chat box now. So, which type of the cerebral palsy characterized by the bilateral spasticity with more involvement of the lower limb than upper limb? So, bilateral. Bi means what you say? Bi means die, and more in lower limb. So, क्या मिल जाएगा यहाँ पे आंसर? Yes, diplegia. So, diplegia में क्या पढ़ा था अपन ने? Die means second. So, second most common type of the cerebral palsy, spastic palsy in India.
पीएल से क्या पढ़ा था अपने, पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया। यस, एल फॉर लोअर लिम्ब मोर इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, और बाई से बढ़ सकते हो, बायलेटरल स्पास्टिसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेब्रल पाल्सी इज अर्ली हैंड प्रेफरेंस। हैंड हैंड मीन्स एच वाली सेरेब्रल पाल्सी कौन सी है, हेमीप्लेजिया। ई फॉर इक्विनोवोरस इसमें होता है। विच टाइप ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी इज मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद सीवियर इंटेलेक्चुअल इम्पायरमेंट एंड जनरलाइज्ड डेवलपमेंटल डिले। यस, सो जनरलाइज्ड डेवलपमेंटल डिले, सीवियर यहाँ पे सीवियर इंटेलेक्चुअल इम्पायरमेंट इज क्वाड्रिप्लेजिया। सो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द क्वाड्रिप्लेजिया, मुनि बाबा। सो मुनि बाबा का दिमाग काफी स्लो हो गया था और इसमें सीवियर डेवलपमेंटल डिले मिल रहा था। सो मोस्ट सीवियर एंड मोस्ट कॉमन cerebral palsy in India is quadriplegia. Now next, which of the following cerebral palsy involve the movement like rigidity, dystonia, athetosis? So dystonia D4 क्या याद किया था, डिस्काइनेटिक। यस, डांस वाला, डिस्को डांस वाला, सो डिस्काइनेटिक। Which of the following cerebral palsy is most commonly caused by periventricular leukomalacia, PVL? So उसके नाम में आता है PVL, PL, yes PL, periventricular leukomalacia dysplasia. Which type of the cerebral palsy is often associated with the frozen cephalic cyst? Yes, पूरा पूरा सिर में क्या किसने ले लिया था, हेमा ने, so hemiplegia. Yes. Now next. So next is, which of the following is best to describe for the motor impairment in quadriplasia? So quadri means four limb. So affect four limb with the marked motor impairment. Which of the following cerebral palsy may present with severe asphyxia leading to damage to basal ganglia and thalamus? Basal ganglia. So basal ganglia related cheese is dopamine. Dopamine related cheese is dyskinesis, movement. So dyskinetic. Now, which type of the cerebral palsy most commonly affected with the flexor contracture and difficulty in swallowing due to supranuclear palsy? So supranuclear palsy, सुपर पावर किसके पास है, मुनि बाबा के पास में। और यहाँ पे फ्लेक्सन पोस्टर में कौन बने बैठे हुए हैं, मुनि बाबा। सो यू कैन से मुनि बाबा वाली कौन सी पालसी थी, क्वाड्रीप्लेजिया। नाउ नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ द cerebral palsy learning disability most likely is seen often with a schizzering gait and commando crawl? Yes, schizzering, किसके पैर में आपने सीजर दिखी थी, डिप्लेजिया। एक बार और यहाँ पे अपने अपने पिक्टोरियल निमोनिक देखते हैं। when you remember the picture of the Dipti, this girl is Dipti. Dipti means dysplasia. यहाँ पे सीजर देख रहे हैं तो सीजरिंग गेट इज देयर। यस, पीएल यहाँ पे लिखा है, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया इज देयर। यस। नाउ सेकंड अपन ने देखा था, सेकंड विजुअल निमोनिक इज हेमा। यस, हेमा में क्या पढ़ा था अपन ने, एच फॉर हैंड, हैंड वाला चीज ज्यादा थी और पोरेन सफेलिक था। दिस इज मुनि बाबा। यहाँ पे पोस्टर कौन सा है इनका, फ्लेक्सर। सो फ्लेक्सर कॉन्ट्रेक्चर यहाँ पे मिल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सेरेब्रल पाल्सी। अब आप आसानी से कोई सी भी सेरेब्रल पाल्सी के टाइप और उनमें कौन से फीचर होते हैं उनका आंसर कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मोस्ट कॉमन सेरेब्रल पाल्सी इन इंडिया, मोस्ट सिवियर सेरेब्रल पाल्सी इन इंडिया, यस मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड विद एसोसिएटेड विद द सीजर्स विच सेरेब्रल पाल्सी। एंड इसके बाद आप बता सकते हैं अपर लिम किस में ज्यादा कॉमन है, लोअर लिम किस में ज्यादा कॉमन होगा। यस, स्किजरिंग गेट किस में मिलेगा, कमांडो क्राउल किस में मिलेगा। यस, सो दिस ऑल अबाउट. Thanks for the participation. If you want to, if you need the PDF of this session, there is a link in the description about the WhatsApp. So you can message us on the M3 Academy Business WhatsApp account. We will share the PDF with you. Thanks for the participation.